10th National Conference on Disability. Technology's pervasive influence offers transformative potential, particularly in the disability sector. With the blend of understanding, innovation, and imagination, technology can drive inclusive solutions such as sensor-equipped smart canes and AI-driven personalized support. This panel explores how technology dismantles barriers, empowers and fosters inclusivity for persons with disability across education, employment, and social engagement. With this, I would like to call upon the moderator for this panel, Mr. Sameer Nigam, who is the CEO of StratBeans Learning Solution. Next, I would like to call upon the panelists, Mr. Prashant Ranjan Verma, Mr. Srinivasu, Mr. Hani, Mr. Anuj Aggarwal, I'd like to request Mr. Nigam to introduce the panel. Over to you, sir. I'd also like to invite Mr. Raghav. This is going to be a very exciting next 30 minutes. So guys, we also have people joining online. So be ready with that. I guess we can project them here or not just quickly. Okay. All right. So that's great. Now, see, the topic is very interesting today, and I'll tell you why. So there's a lot of technology moving around. There's a lot of inspiration behind many technologies that are implemented right now. The topic we have chosen is simply to say imagine, innovate and inspire, but also the idea is to implement it. Now, for that reason, the panel that I have today is also having experience of some of the technologies which have really worked. And there's a very thin edge between those technologies which make sense and some of those technologies which are just there for technology's sake. Maybe their time is still away. And I was talking to one of the panelists on the side, and they told me that बहुत सारा ऐसा innovation है जो लोग करते हैं और टेक्नोलॉजी बना देते हैं, लेकिन बाद में पीपल विद डिसेबिलिटी जो उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उतना काम का नहीं होता है. तो इसलिए what we are trying to do today is to discuss a few themes, not everything we can do, but some of the very exciting themes which I find everywhere. We're going to talk about AI, we are going to talk about collaboration between different bodies who are involved in this kind of implementation. Then we will also touch on the subject of how innovation and technology, they actually happen on the ground. What's the organizational perspective? How the mobile devices are helping in that, and many people who have already been a user of this technology will also be part of it. So now let me try to take roll call. Let me see who all are here, and because there are online folks also. So my technical team will have to help me. I guess I can see some people over there. Okay, so let me introduce you to everybody, but then later on I'll let them introduce themselves as well. So I have Mr. Prashant Ranjan, clap for him. He's on the stage right now. He is General Secretary of National Association for Blinds in Delhi, and it's a premier NGO, and there's a lot that they do. So, but I'll let him introduce himself. I guess we'll have a mic for him. I'll hand it over to him. Yeah, thank you very much. Yes, I am from National Association for the Blind, but I think I'm in this panel because of the other roles that I have. I am a digital accessibility specialist. I work for the DAISY Consortium, and I'm also associated with some UN agencies.
So that's beautiful, sir. I think you have done some good stuff where digital talking books are involved and providing a lot of support to libraries and publishers. So we'll cover a lot of those things. When we ask you questions, we'll try to unravel some of those threads. Okay, looks like we have Mr. Hani Bakchandani, who's founder of Torchet Online. Are you there, sir? No? Okay. Yes, sir. Oh, you there? Okay, wonderful, wonderful. You can hear you, of course. So please introduce yourself. Let us understand about very passionate work that you're doing about social innovation, and what do you do, sir? Yeah. Good afternoon, everybody. This is Bhushan Punani. I'm working as General Secretary of Blind People's Association, and I've been part of the Sarthak journey from day one. And I'm very proud to be associated with Sarthak and with technology. And it's a pleasure joining all of you. Thank you. All right, wonderful, wonderful. So guys, this is the last, what is that? Last season of the evening. I mean, the way you watch Netflix. So in that sense, so sit with us and excite us a little more. Half an hour, and this is all it takes. So now we will also like to see that there's probably one more person who's online with us, and I can only see one face. So we'll move on for a bit, but help me discover that person who's hiding and who's online right now. So I'll go to Mr. Raghav Saha right now, and you know what? He is so generous. We asked him maybe just last week, sir, isn't it? I mean, you agreed to join us, and he has done some real quality work. He's an alumnus of IIT Kanpur, very senior batches, and very respectably known in the industry, and right now he's associated with CII. So, sir, let us know a little bit about you. You have said everything, Samir. My association with the area of disability is something like about 35 years old. And at that time, the government of India used to have the Ministry of Welfare, and disability was one of the functions. So I've been working on looking at research and development in assistive devices and other technologies across the board for all disabilities. So I still continue in a rather indirect manner because I'm now superannuated, but still my interest remains. Right, sir. Right. So thank you for joining us. I will now try to see whether we can have our uplink working with Mr. Hani Bakchandani, because I guess we couldn't trace him online. Just a quick confirmation from Deepika and we'll be good. Are we able to connect with him, Hani? Okay. So we'll keep trying. You know, this is how technology is. It somehow sometimes plays a surprise on you. And we are talking about innovative technology, so this is nothing new to us. So okay, so let me start the session by asking a few interesting questions first. How about that? And of course, anybody who has any questions for our panelists in the audience, please note them down, because they can answer most of the most difficult questions today. They have a background in all the subjects that you could imagine, starting from AI to, the most cutting edge implementation. But by the way, before I go ahead and ask the question, let me ask you guys, have you heard about Neuralink? Any one of you? Just raise your hand. Okay, it's probably not that popular right now in India. I mean, it's probably not that well known, but this is one of the things which is coming up, and you should check it online as well yourself. It is from what Elon Musk's organization is doing. So what they're trying to do is they're trying to create a neural link of brain, and they're trying to bypass the disabilities. If you have any disabilities like you can't hear or you can't see, then some of those difficulties can be solved if your brain can be directly connected to your spine, and that spine can somehow be connected to the like a larger network of all the, so that's why it's called neural link, like all the neural bodies can be connected together. It's pretty fancy concept, but let me not stay on that. Let me ask my first question here. And this is going to be something which is really sort of making waves in the industry. And my question is to Mr. Prashant Ranjan Verma.
So, sir, what I'm going to ask you is, we hear a lot about artificial intelligence. We understand that it can be very personalized. Many times it can understand who the audience is, and it can also be, therefore, hopefully, be used for creating supportive solutions for people with disabilities. So please tell us what's your experience with that. Do you think that this is the right time for AI? Do you have something that you can talk about today? Please give us some details. Yes. So actually first, so in the last 2 decades, I will say there have been so many developments in the field of technology, which we generally call as assistive technology. It has actually virtually changed the definition of disability. So tasks which were considered impossible for people with disabilities, they are now doing those things very easily. And in that connection now, we have the developments in AI. So already a lot of like companies and developers and individuals, they have created many solutions, many software, like many apps, using which people with disabilities are benefiting quite a lot actually. And the future is like very bright, very immense, very promising. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो खास करके मैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एग्जांपल्स दे सकता हूं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए कई ऐसे मोबाइल ऐप्स अब बना दिए गए जिससे ब्लाइंड पर्सन्स कोई भी प्रिंट मटेरियल इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं. वो उनके सामने कितने लोग बैठे हैं, उनको उनके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, क्या वो स्माइल कर रहे हैं, ये भी बता सकता है. यहाँ तक कि उनकी एज क्या है, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं. तो इस तरह के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है. और इससे भी आगे बढ़ के अब जैसे कुछ ऐप्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसमें काम किया है और दूसरी कंपनीज़ भी हैं. जैसे मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊं और वहाँ का मेन्यू कार्ड उठाऊं, जो कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड होने के नाते नहीं पढ़ सकता, तो मैं मोबाइल से उसकी फ़ोटो लेकर उससे पूछ सकता हूँ बोल करके वर्बली कि इसमें मुझे वेजिटेरियन आइटम्स बताओ, या इसके अंदर क्या कोई सैलेड का आइटम है वो बताओ, उसकी प्राइस बताओ. तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो पूरा इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत स्पेसिफिक आंसर भी दे सकती है. इसी तरह से जो और बहुत सारे दूसरे डिसेबिलिटीज़ हैं उनके भी बहुत काम आ रही है. जैसे उनको एक तरह से आप समझ लो असिस्टेंस प्रोवाइड करना. So these technologies are now able to like connect the person with disability with a sighted person, a non-disabled person anywhere in the world, and they can like make them see their surroundings and they can get them to help them. And that has been now extended to a virtual you can say volunteer or a virtual friend also, and that virtual friend can also do some of the tasks that a sighted family friend or any other person would have done. इस कनेक्शन में जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी इसमें काफ़ी एक्चुअली जब से चैट जीपीटी लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था तो उसकी जो पोटेंशियल देख करके काफ़ी एक्साइटेड हुआ, उसको यूज़ करना शुरू किया. और फिर मैंने हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी और अपने ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड जितने लोग हैं, इनफैक्ट पूरी एक एनजीओ फैमिलीज़ जो हमारी है, बहुत सारे एनजीओज़ कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी चैट जीपीटी के यूज़ के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ की. और इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि जो डिफरेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्किल इन्हांसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारा असिस्टेंस भी उनको मिल रहा है. और 2 ऐसे एग्जांपल मैं और देता हूँ जिसमें थोड़ा मेरा क्लोज इन्वॉल्वमेंट है. जैसे जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स, इसकी इंफॉर्मेशन लेना बहुत चैलेंजिंग है. ख़ास करके जो रूरल एरियाज़ में हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं, कई बार उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वो मोबाइल या स्मार्टफोन या तो है नहीं या चलाना नहीं जानते या टेक्निकल स्किल्स नहीं है. तो उनके लिए इस टॉपिक पे किसी से भी बात करना, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी टैबू माना जाता है, काफ़ी लोग उसे छिपा कर रखते हैं, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ भी है. तो वो इन्फॉर्मेशन उनको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से हमने दिलवाने का एक प्रोजेक्ट किया है. उसमें डिसेबल पर्सन किसी एक फ़ोन नंबर पे कॉल करके उधर एक आप समझ लो जीपीटी है, मतलब चैट जीपीटी वेरिएंट है जो बात कर सकता है एक अच्छी वॉइस में, जो ह्यूमन वॉइस तो नहीं है लेकिन
बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड और ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक वॉइस है, उससे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो बात नहीं कर सकते वो चैट करके, व्हाट्सएप में टेक्स्ट चैट करके भी ले सकते हैं। इसी तरह से कोई भी बुक्स पढ़नी है तो बुक्स को सर्च कर पाना, खोल पाना, पढ़ना, अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने उसको पॉसिबल बनाया है। केवल या तो बोल कर या टेक्स्ट मैसेज करके आप अपनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रीड आउट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा है जस्ट बाहर एक स्टॉल पे हनी जो अभी हमारे पैनल में है, उनका टॉर्चिट का ज्योति नाम का एक स्मार्ट वेयरेबल कैमरा या ग्लास कह लें, वो भी है। वो सबसे बड़ी नई चीज़ है अभी हमारी फील्ड में। तो एक कैमरा हम अपनी बॉडी पे रख सकते और वो सामने सब कुछ एनालाइज करके आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो उसमें काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऑफ कोर्स अभी बहुत डेवलपमेंट होना है। इंडियन लैंग्वेजेस कंपैटिबल चीज़ों को बनाना है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट बाहर हुई हैं। तो फ्यूचर इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट, आई विल से वेरी प्रॉमिसिंग। एक्सेलेंट। आई मीन ये जो ऐप्स आपने बताए ये तो चेक करने लायक है, और इनसे जो पर्सनलाइजेशन की उम्मीद है उसमें आपने ये भी बोला कि डिफरेंट एजेस, इमोशंस उनको समझ के और ऐसे कन्वर्जेशंस भी किए जा सकते हैं जिनमें कि प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आपने इंडिकेट किया है, वर्चुअल फ्रेंड आपने बताया। So this is really exciting now. I think we will go and try to find out more. तो टेक्नोलॉजी में तो ऐसा ही है, देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आज पता चलेंगी। इन अबाउट 20 minutes वील शो यू 3 वीडियोस, जो 3 बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं हमारे पास में सार्थक के। उनमें एक है रोजगार सारथी, और एक है कैप सारथी, और एक है आपका ज्ञान सारथी। ये 3 पोर्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप उसका वेट कीजिए, तब तक ऑनलाइन जाते हैं, डॉक्टर भूषण से बात करते हैं। डॉक्टर भूषण, आपके बारे में ये भी जानता हूँ कि आप का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये it's not only with visual disability, but it is also sort of connected with other type of disabilities. And I understand कि आप IIM अहमदाबाद के बड़े सीनियर एलमनस भी हैं, और बिल्कुल सामने ही आप IIM अहमदाबाद के वहाँ पे आपका ऑफिस है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहा हूँ जो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिसोर्सेज अगर हैं और काफ़ी डॉलर्स अवेलेबल हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की उम्मीद की जा सकती है। बहुत सारी AI और बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सपेंसिव भी है, पर आपने कुछ इस तरीके के काम किए हुए हैं जिसमें आप हमें ये बता सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड जब कॉस्ट इफेक्टिवली अगर हमें कुछ सस्टेनेबल सोल्यूशन बनाना है और एक्सटेंड करना है टेक्नोलॉजीज़ को फॉर PwDs, so then how can we do that? Do you have some examples also which you can share to inspire us? Yeah, first of all, thank you very much. Appreciate your introduction. और मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी हमारे देश का सौभाग्य है कि पूरे देश में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, ITIs और काफ़ी ऐसे जो सिस्टम हैं, वो लोग अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और गर्व होता है कि हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है और हो रहा है। लेकिन मुश्किल आती है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है वो व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं, जिनके लिए है, या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको मालूम नहीं है, तो कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं आपके सामने खाली एक 12 पॉइंट पेश करना चाहूँगा, बहुत ही छोटे हैं। पहली बात ये कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो भारतीय होनी चाहिए, शुड बी इंडिजिनस। इसको लोकली डेवलप किया जाए, लोकल लोगों से किया जाए, ताकि हमको फॉरेन पर डिपेंड नहीं करना पड़े, तो ही हम लोग इसको अच्छी टेक्नोलॉजी गिन सकते हैं। सेकेंड, अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, कि हमारा देश भले अभी काफ़ी विकसित हो गया है, विकास कर रहा है, लेकिन लोग तो गरीब ही हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब तक ये टेक्नोलॉजी लोगों की पॉकेट के अनुसार अफोर्डेबल नहीं होगी, इसको आगे बढ़ाना कठिन है। तो तीसरा ही बहुत ही एक सही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि जो हमारा आर्थिक सामाजिक जो वातावरण है उसके अनुरूप हो, उसके बिल्कुल अनुरूप चले तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके जो भी ये मास प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करके जो चाइना यूज़ करता है,
ताकि काफ़ी देशों को सप्लाई की जाए, ताकि इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिले, और ताकि जो अभी मान लो कि आपने टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई बना दी है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि उसमें आप जेनरिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज में है और हम डे टू डे यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनके साथ जोड़ा जाए तो ये अफोर्डेबल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यदि उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके जो आईसी है, उसके जो सर्किट्स हैं, जो एआई आप यूज करते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए और डिफिकल्ट टू प्रोक्योर नहीं होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं काफी टेक्नोलॉजी में चाइना के प्रोडक्ट यूज किए जाते थे और तकलीफ होने के कारण आज हम लोग उसको बहुत मुश्किल होता है उसको प्राप्त करना। हो सके तो ऐसे प्रोडक्ट हो कि जिनको हम लोग इजिली प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो भी लोग ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि हनी स्क्रीन पर है, मैं आगे थोड़ा आऊंगा, कि सभी लोग मिलकर संपर्क के साथ, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। होता क्या है, यदि 3-4 कंपनी compete करने लग जाएंगी तो प्राइस वॉर होगा, उसमें अलग अलग होगा। यदि वो कंबाइन करके अपनी टेक्नोलॉजी को एक मत कर कर एक तरह से उपयोग करेंगे, इस टेक्नोलॉजी का प्रचार और प्रसार आसानी से हो सकता है। और तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बड़ा है, कि हमारा देश अभी एक्सपोर्ट पर बड़ा फोकस दे रहा है और हमारे देश से काफ़ी प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी भी यदि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो हमारा रिकवरी है, वो ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। तो हमको टारगेट पूरे वर्ल्ड को रखना पड़ेगा। क्यों नहीं हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में बिके, क्यों नहीं हमारे प्रोडक्ट चाइना में बिके, हो संभव है कोरिया में बिके, अफ्रीका में बिके। तो हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो यूनिवर्सल हार्डवेयर है, जो यूनिवर्सल डिजाइन है, उसको लेकर हम चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बड़ी बात, क्योंकि हमारे देश में सरकार की बड़ी मदद है, ऐसी अथॉरिटीज हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोडक्ट के लिए सपोर्ट करती हैं। तो हमको जो हमारे प्रोडक्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि हमको उसको सरकार की मदद भी मिल सके, वो स्टार्टअप हो अथवा कोई और नया इनोवेशन के फील्ड में नया सिस्टम हो, उसको सरकार की मदद मिले। और जहाँ तक बने, हमारी जो जेनरिक मार्केटिंग चैनल है, जो लोग क्या करते हैं कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना देते हैं, अपनी संस्था की ओर से करने लगते हैं। इससे अच्छा है कि हमारा जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, वो अमेजोन हो के और भी कोई चैनल हो अथवा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, जैसे और कंपनियां अपने प्रोडक्ट पूरे कंट्री में रेगुलर चैनल से करती है, उन्हीं चैनल को अथवा उसके पैरेलल चैनल को यूज किया जाए तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा होगा। और लेकिन एक जरूरी बात है कि जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी हो, टैक्सेशन हो, लाइसेंसिंग हो, वो सभी पूरा करना अनिवार्य है। क्योंकि समय कम है तो मैं खाली 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। एक तो मुझे खुशी है कि हनी स्क्रीन पर है। 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने हमको एक नया मार्ग दिखाया है। वो 2 प्रोडक्ट हैं स्मार्ट ग्लासेस। एक सनबोर्ड कंपनी ने डेवलप किया है और अभी टॉर्चेड ने डेवलप किया है, हनी ने जो डेवलप किया है। मैंने जितने पॉइंट बताए, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि ये 2 प्रोडक्ट लगभग उन सभी पॉइंट्स को मीट कर रहे हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, अफोर्डेबल है और इसको प्रोड्यूस करना काफी आसान है। ये ऐप बेस्ड है तो उनको आप डेवलप इंप्रूव कर सकते हो। यदि आपने ऐप को इंप्रूव कर दिया तो आपका जो भी एक्सेस है, ऑटोमेटिकली जो ऐप यूज करने हैं उसके लिए वो इंप्रूव हो जाएगा। और इसको आप हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं, नए नए फंक्शन ऐड कर सकते हैं, नई नई इसको और ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं, एनबीडी के साथ लिंक कर सकते हैं अथवा किसी और सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कंप्यूटर बेस्ड है और ये केवल रेगुलर हार्डवेयर ही यूज कर रहे हैं। इसमें खाली कैमरा भी रेगुलर है, मोबाइल भी रेगुलर है, खाली जो ऐप है वो स्पेशल है और उस ऐप को आप हर तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये हमारे और ये दोनों प्रोडक्ट है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और खुशी की बात है कि खासकर हनी ने इसको रेगुलर मार्केटिंग चैनल को उपयोग किया। उसका जो स्मार्ट केन है, आपको जो उसकी केन है, वो आप बिल्कुल अमेजोन पर जाकर भी ले सकते हैं। आप किसी और चैनल से भी उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, जो काफी अच्छा एक डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश सीएसआर के और बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह से जा रहा है। जैसे लॉट ऑफ मनी इन द सीएसआर, तो हमारे प्रोडक्ट, हमारी डिवाइसेस, हमारी टेक्नोलॉजी सीएसआर में कवर क्यों नहीं हो। फिर से मैं हनी को बधाई देना चाहूंगा कि उसने बहुत मेहनत करके काफी पीएसयू ने इसको एक्सेप्ट किया है। पूरे कंट्री में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो टॉर्चेड डिवाइस है, उसको एक्सेप्ट किया है और उसको उन्होंने सपोर्ट किया है, जिससे आप काफी लार्ज स्केल पर दूर दराज के पूरे देश में, वो मेघालय हो के
सौराष्ट्र हो के कच्छ हो के वो महाराष्ट्र हो के जम्मू कश्मीर हो, हर जगह प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं क्योंकि CSR बहुत बड़ी मदद अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, इन दो प्रोडक्ट ने ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है। आज आपको टॉर्च इट साउथ कोरिया में भी मिलेगी, आपको अफ्रीका में भी मिलेगी, और होपफुली अमेरिका और UK में भी मिलेगी। जब तक हम लोग इस मॉडल में नहीं जाएंगे तो हमको कॉस्ट रिकवर करना और कॉम्पिटिटिव बनना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे गर्व होता है कि दोनों प्रोडक्ट जितने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, जितने उनको सपोर्ट मिलता है अंडर स्टार्टअप, अंडर एनी फोरम, ये प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरी सभी दर्शक को विनंती है कि जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, आप इस मॉडल को फॉलो कीजिए। तभी हम लोग इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकेंगे, इसको इकोनॉमिकली वायबल बना सकेंगे, पूरे विश्व में इस प्रोडक्ट को भेज सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अभिनंदन देना चाहूंगा, सार्थक की टीम और हमारे चेयरमैन को बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सही टॉपिक चुना है। और मैं चाहूंगी कि जब समय होगा तो हनी भागचंदानी इस पर और भी थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इतने अच्छे ढंग से बताया, आपने पूरा फ्रेमवर्क हमें समझा दिया कि कैसे होना भी चाहिए, और आपने एग्जांपल्स भी दे दिए। तो इससे काफ़ी होप जनरेट हो रही है कि कॉस्ट इफेक्टिव सेटिंग में भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन करेंगे। एंड हनी को आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट तो हम लोग भी करना चाहेंगे, बट हनी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इतनी देर से हम उनसे लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हनी आ गए हैं अभी, तो दैट्स वेरी गुड। हनी, फर्स्ट थिंग कि आपका ज्योति ऐप बाहर लोग देख रहे हैं, काफ़ी लाइक किया जा रहा है। और बिफोर आई आस्क यू क्वेश्चन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज यू जस्ट जॉइन नाउ, प्लीज़ गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। Sure. So sorry for the delay. I got up something personal. Uh, yeah. So hello everyone. This is Honey from Torchit. Torchit is a social enterprise working towards inclusion and empowerment of persons with disability by providing most innovative and affordable solutions. जैसे पुरानी सर ने आपको बताया, thank you पुरानी सर. Sorry. No, go ahead. No, nothing. Yeah. So जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली इनोवेटिव हैं प्लस अफोर्डेबल भी हैं। मैं अफोर्डेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि जैसे पुराने सर ने भी एक ग्राउंड सेटअप किया कि वी आर गोइंग टू अ डेवलप कंट्री सुपर सून, बट अगेन द पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे आर लो इनकम ग्रुप, तो वो महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो टॉकिंग कैलकुलेटर जो 1500-2000 का मिलता है वो हम 500-700 रुपए में बेचते हैं। लाइक जो टॉकिंग कैलकुलेटर जिसकी जरूरत हर विजुअल इंपेयर्ड को है, या तो फिर जो वाइट कैन्स, इंपॉर्टेंट वाइट कैन्स जो रोलर वाली वाइट कैन्स हैं, वो हम ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के थ्रू 750 रुपीज में देते हैं, जो वर्ल्ड में अवेलेबल है वो 3000-7000 में मिलती है। So this is the examples which we want to share for the inclusion of not only visual impairment but all the disabilities. If I can share my screen, I can show you what work we do. Like, can you please allow me to share my screen? So we'll try to keep it very brief right now. अभी Sure. I'll get back to you कि अभी uplink में थोड़ा problem है, तो शायद हाँ हम जी। स्क्रीन शेयर का अभी नहीं कर पाएंगे आपसे, बट येस आई विल सी, अगर हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज वी लव टू नो मोर। एंड आई कम बैक टू यू विद अ क्वेश्चन जस्ट इन अ बिट, एंड इस बीच में लेट्स कम बैक टू द people who are sitting with us on the podium right now. Mr. Raghav, आपके साथ में सामने हैं अभी, आपसे एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है, एंड बिकॉज यू हैव लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड यू आर द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच are either sometimes very good and implementable or totally not implementable but excellent, and you can perhaps talk to us about what are the strategies that can be adopted to especially design mobile applications if we are trying to create, and that those applications should really cater to diverse needs of individuals with not only one disability but a lot of different disabilities. So we're really trying to understand that very hard question from your experience, sir. Yes, I think this question spreads across all the disabilities, not only disabilities, whenever designing for any application. So first thing is the user's experience with the technology is extremely important.
whatever you do, and unless the user is satisfied, as mentioned by Samir, the technology is not going to take off. In fact, the literature suggests 80% of such technologies or engineering designs or devices which are done at the, let's say, research level, 80% of the time they don't come out of the cupboards because the population, the user population is not really use them. The important thing about this is whether we have identified the problem properly or not. I'll give you one example. There was a time, and I'm talking about 1980s and early 90s, when everybody was talking about wheelchair, especially in the rural areas. I surveyed something like about 80 odd villages where 1 or 2 people were using wheelchairs, but I found that nobody was propelling the wheelchair themselves. So there was always a helping hand who used to push it. So I say, why do you need a caster wheel in the wheelchair? And that too, the caster wheel is the imported caster wheel and imported design, I would say, with very, very weak brackets. Now, if you remove all these things, the mobility device in the villages will become cheap and very affordable and also usable because you require less space to keep it. So this is one example where need identification is very, very essential. Now coming to the question of use of mobile apps and software. Now let's understand one thing, that you may develop a mobile app, but you really don't know which phone it is going to work on because you have not talked to the mobile manufacturers. Does your app fit into the available mobile phone or not? Now this is a question which I have heard research proposals, maybe about 200 research proposals where people have been talking about it, but they have not looked at this whole concept. Even if I develop an app, whether a manufacturer is going to accept it or not, number one. Number two, even the software which you use, is it free from any intellectual property rights? That's also important because in the world of smartphones today, if you look at the smartphones, a lot of IPs are there, but this is one of the important issues which I think all researchers, all people who are innovators, they'll have to keep in mind. You can make certain 1 or 2 pieces and then claim a lot of things, it does not work. So from here, I would say that it's important that whatever device you take, you have to really have a good field trial before market can accept it. Because we must not forget, the time is moving very fast. If a user rejects a design, for next 10 years he is not going to look at similar designs. So you have actually taken aback the role of technology in the rehabilitation process some years back. In India, we have a lot of researchers who are working in this area across the country. I work with Department of Science and Technology also. We receive a lot of proposals, but every time, we have a technology for identifying the sign language, converting into speech or converting into text. A lot of projects are going on, but the problem again comes, taking it to the field, trying it out, and say, okay, this is the product which will be acceptable to people. And this is one part where I think we have not done very well. Now, the other thing which we have to realize, since you're talking about a strategy, Samir, is whosoever is engaged in this kind of research program, today, most of the research in fact, I would say 98% research programs in this area are funded by the government of India. So you must have very clean focus, because we see proposal where people are mixing too many things, clear objective. Timelines have to be very, very important. Can we ask the researcher, is that person going to work on this problem for the next 3 years or not? I'll tell you why I'm asking this question and why the researchers are important in this country, because we cannot depend on imported technology for everything. We have to have our own technologies, own devices, our own engineering solutions. So what happens, this is my experience, I will not share the names of the institutions, when they came with a project proposal, and I'm talking about 1980s,
And this question was asked from the faculty member of a very, very reputed institution, will you work in this project for 3 years? He said no. So reason is the interest, the continuity, and the dedication required for doing this work still is not available in the country. I'm talking from basically from the devices point of view. And my one suggestion would be, and this can be through various NGOs who can put these suggestions to the government also, is that at the engineering college level, either at the BTech level or at the MTech level, we must introduce some design course, not the full course, but some design features for disability. And at the MTech level or the PhD level, government can give specific or special scholarships to students who are working on the design and development for assistive devices for disabled people. Now, I would just quote one study which has appeared in the latest annual report of the Department of Disability, and which is interesting, and I think many people know it also. A study was conducted by the National Institute of Labor Economics Research and Development, which found that all the assistive devices which are given under the ADP scheme, only 48% people who use the devices got employment. Only 39% people started studying after receiving the appliances. 52% resumed work, and 66% improved mobility. So there is a big gap. There's a big gap in the sense that the devices which are given to persons with disability today under the ADP scheme, they are just not meeting their needs. So we have to look beyond it. What is it that we require? You know, we must realize that our PwDs, the children, they watch TV every day. They may also go to OTT platform and other thing. So their aspirations are very high and it's changing very fast. So that any technology which we want to develop, unless it is something of a long-term duration, for example, brain to computer interface, or like you said, neural network and other things, it's fine, that will take time, but other things, the solutions have to be faster. And this has to be built in somewhere. The regular approach of government project being duration of 3 years, I think we must get out of it. So we should say, okay, if Samir, you want to do this project, finish in 1.5 years, and these are your targets. So some kind of strategy of this kind, very focused one, would be required. Lovely, sir. Such a complete answer. We start with identifying the problem correctly, and then design has to be correct. And so guys, look at you, the audience. I mean, you guys are the best, most awesome audience, I'll say, because you stuck around for this long. I mean, the attendance is thin right now, but you are still there. Now, so therefore, I'll take your help in taking the next 5 to 7 minutes of the session, which is remaining for interactive session forward. So if you have any questions, observations at all, I'll invite you to do that just after the question that I asked to Hani. And because you've been here and there might be something that you saw in the session today, maybe something which was imaginative, innovative, inspirational technology, anywhere else you found. So if you don't have a question, at least let's understand if you have any observations. Do you want to add anything to that? So I'll come to that just in a minute. But therefore, the last question that I'm going to ask Hani, and Hani, because I understand you have done a lot of good work. I'll still request you to keep it very short to the question which I'm really very intrigued about. You've been part of a lot of collaboration, and you've really done quite well taking the solutions to campus. So many lives you have impacted. So tell us, what kind of give us a sense of collaborative endeavors which are going on, being undertaken by technology firms or disability organizations, even government, or if you see any educational institutions, and those specific technologies which are for inclusion and empowerment. I'd like you to focus just on that. So if you can summarize it in 2 minutes for me, that would be excellent. And then I'll open it up for our awesome audience. Honey, Sure, sir. So right now we are majorly working with educational ministry, like Ministry of Education in Central, to make a new curriculum for the persons with disability. And we are making a lot of
content and materials. So our PWD, even children with special needs, can be included into the mainstream. So this is a new collaboration which we are going right now. Apart, we are collaborated with a lot of other assistive startups. Today only we have onboarded one startup who is making affordable portable ramps. So, portable ramps is one of the huge requirement right now, and we are trying to collaborate with them and how we can market in terms of different B2B, B2G segments to make workplaces, even the any public building accessible. Apart from this, we collaborate with a lot of NGOs, especially with Blind People Association and now Sarthak. We have opened our resource centers there. So in resource center, we where this anyone can come, not only for persons with disability, anyone can come, experience and sensitize about the assistive technology, and this will give a knowledge to them like how a person with disability is capable to, like everywhere I'm saying like a blind person can read faster than a sighted person, and many call centers has adopted this model, and now a lot of blind person are employed in call centers, and even in not only call centers but also in programming sector. Also in technology part, we are collaborated with Microsoft to make our AI classes more accurate and more advanced. Because now Microsoft is again collaborated with OpenAI, which is ChatGPT, which everyone has used. So in future, we are integrating ChatGPT or even mental, like children with special needs, to talk to them and understand their voices. So this is what technological partnerships and even the government partnerships we are doing to create awareness and inclusion of persons with disability. Lovely, that's great. I mean, it looks like you have done very good collaboration with NGOs. And at that point, that gives me a segue to talk about the fact that Sarthak has really given us a very good opportunity to connect, from all across sectors, and Yes. definitely that's amazing. So thanks for taking that opportunity, Honey. And over to my awesome audience now. So, do you have any points to share now, or any questions to ask? Please feel free to raise your hand, and we'll come to you with a microphone. And don't be shy. Okay, over there. Uh, yeah, he says he can speak without. Can you hear him? Or we do? Yeah, we'll just rush to you with a mic. That would really improve our experience of recording it also. So, so yes, this is an awesome setup today, isn't it? I mean, two people are online, two are offline. People are connecting from Ahmedabad. Translation is happening right on the screen. This is the best use of technology today, isn't it? You agree? You were nodding. Okay, over to you, sir. Thank you. You see, and I'm sure And the can you experts we introduce have yourself? would be Can you first introduce yourself Okay, too? my name is Vijay Jodha. I'm a filmmaker. I've been associated with Sarthak for since it was formed. In fact, I had the pleasure of interviewing a gentleman, Shant from National Association of Blind. I had filmed him many years back on camera for a documentary. My question is that, in India, we, apart from the technology part, which has been discussed by all these distinguished experts we have here, there is also the issue that we have not tried to make it very cultural specific, and not just to the so-called Devyang community, but even to rest of the society. For example, when you're using maps, it has this very strong American accent which mispronounces all the destinations. And now that we're using similar technology across India at airports, bus depots, and railway stations, everywhere they have that. Instead of localizing, we seem to be homogenizing, which is making it more difficult, number one. Number two, websites have been around now for 20, 30 years. Everyone's on it for a long time. Most of them are not accessible to the visually impaired, as you know. And perhaps to a lot of other people also there are challenges, which is a very, very simple technology, but we don't seem to have that. Thank you. So you have really shared your dissatisfaction with that as well. We all share that. So anyone in the panel would like to respond to that? Yeah, I think what the problem is stated is very much real. But what is happening today since I'm witness to a lot of research programs, especially for education modules where people use technology, you will find a researcher coming from Tamil Nadu, he or she is talking only in terms of Tamil, somebody coming from Karnataka talking in Kannada.
So we encourage that thing, but at the same time, the encouragement is being given that how do you take it to the let's say, Tamil-speaking area. So it requires a lot of interface in various NGOs, for example. NGOs can be of great help coming from two language sides and find out what are the best solution. On the cultural side, 49% of our disabled population are women. And I find very few technological solutions which are addressed to women. So I think some thoughts need to be given to that and really find out what their needs are. People who are aware of the old polio thing, the women wearing sari and wearing calipers was a big, big issue. So I'll just leave it there. So I will just add one point. So actually, development of assistive technology or product in India has not been like a sustainable or profitable thing at all. Like it's just now that like last 2-3 years, there is a lot of development. And because of this, not many companies or individuals have done much work in this field actually. Like for example, development of text to speech. So there are many projects, research projects and student projects in the past to develop voices that can speak Indian languages in Indian accent. But unfortunately, none of them actually could mature and actually come to that stage where people can use it. So it's just fortunate that Microsoft and some other companies, Google and all, developed something at least, and that is what we are still using. So, but yeah, the scenario has changed. At this time, I think there are hundreds of Indian startups who are developing some Indian products and technologies, and thankfully they are getting support from the government as well as CSR. So hopefully in the future we will have more appropriate products. All right. So I have space for one more observation or question, if at all. Otherwise, this awesome session comes to an end with your participation, guys. So round of applause for yourself and the panel. And thank you very much. So therefore, now we are going to show you some fantastic videos. One of which is going to be Gyan Sarthi, where the question that you asked, it is probably very much enabled to take care of that. So we're going to start it. So Deepika, please go ahead. Yes. How does a person feel empowered? When he or she has all the information that is reliable and it is something that they can use depending on their choices, depending on their passion, depending on their aptitude. So Cap Sarthi is giving you that information. Gyan Sarthi is giving you the tools by which you can train yourself, train not in any particular discipline but what you want to get out of it. After that, where do I get employment? So that's where Rozgar Sarthi comes in. So you also become part of Digital India. You don't get left behind. You should feel proud that by using these digital tools like Cap Sarthi, Gyan Sarthi and Rozgar Sarthi, you are part of the mainstream as anybody else is. कैप सार्थी का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा. मैं एक बार सर्च कर रहा था स्कॉलरशिप फॉर हैंडीकैप, तो मुझे वहाँ पर वेबसाइट मिला कैप सार्थी का, और वहाँ पर मैं अपना रजिस्टर किया, मोबाइल नंबर अपना नाम. फिर कुछ दिन बाद मुझे मेल आया कि HDFC बैंक की तरफ से हैंडीकैप वालों को स्कॉलरशिप मिल रहा है. वहाँ पर मैंने अप्लाई किया और मुझे 30,000 का फ़ायदा हुआ, स्कॉलरशिप मिला है. So then, therefore, we'll say the evening was very successful. Now we'll distribute the memento, and Deepika, over to you. Sir, please come on this side and pose for the camera as well, so that we can capture this moment for eternity.
So thank you so much, Sameer sir. I believe this panel has given us a lot of information on the technology that can be used for inclusion and empowerment of person with disability. Now the conference has came to the end of our first day of our 2 days of conference. So now I invite S.K. Gupta sir to give the vote of thanks. But before that, we'll be having our national anthem. So everyone can stand. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य